Good morning, my dear students. So today we are going to discuss comparison of adverbs in today's English class. Day before yesterday in the last class, we just did adverbs and its kinds. So I hope those are clear to you, adverbs and its kinds. And after that, we'll do comparison of adverbs. So comparison of adverb, like we do comparison of adjectives. You know very well there is positive degree, comparative degree and superlative degree. We have done it. हमने उसका comparison किया था of adjectives. In the same way we are going to do comparison of adverbs. So if the adverb is of one syllable, what is syllable बेटे? Does anyone know what is syllable? मैंने आपको 4th standard में भी बताया था. I remember it. We took a class in AV lab. वो जो ऊपर हमारे हॉल्स बने हुए हैं, LED was there I told you the meaning of syllable. No one knows? So syllable is a combination of a consonant and a vowel. एक consonant और एक vowel को मिलकर क्या बनता है? Syllable. Like this. S consonant है, O vowel है, so this is one syllable. O vowel है and consonant है, so this is syllable. If the adverb is of one syllable, its comparative is formed by adding ER and its superlative by adding EST to the positive. Better don't unmute yourself. Nakul, Ayush, and someone else was also there. Please don't unmute yourself. ठीक है, तो soon की जो comparative degree बनेगी by adding ER, that is sooner, and superlative will be formed as by adding EST, that is soonest. Soon, sooner, soonest. In the same way, hard, hard, harder, hardest. Fast, fast, faster, fastest. Long, long, longer, longest. Near, nearer, nearest. Large, larger, largest. Is it clear? Is it clear to you, bete? देखिए, there is one syllable. This is vowel and consonant, vowel and consonant, vowel and consonant, vowel and consonant, vowel and consonant. So these are simply formed by adding ER and EST to the positive degree. Right? Now coming on to the next slide. Hanji. So adverbs ending in ly form the comparative by adding more and the superlative by adding most. ठीक है, जो ly से फिनिश होते हैं हमारे एडवर्ब, लाइक केयरफुली, जेंटली, स्विफ्टली, वाइजली, so their comparative and superlatives are formed by adding more and most. For example, carefully, more carefully, most carefully. Gently, more gently, most gently. Swiftly, more swiftly, most swiftly. Wisely, more wisely, most wisely. Now, some adverbs are compared irregularly. Irregular मैंने आपको पहले भी बताया था. What is irregular adjective or irregular adverb? Yes, बेटे बताइए जरा. Raise your hands and tell me what are irregular. मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के टाइम पे भी बताया था दिस वर्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स. आस्तिक, अनम्यूट योरसेल्फ बेटे. हाँ जी बच्चे, व्हाट इज इट? मैम जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री अलग मैम डिफरेंट हो. हाँ, तो आपने फिर हैंड रेज क्यों नहीं किया इफ यू वर नोइंग द आंसर? मैम आई वाज नॉट श्योर. I was not sure. No problem, बेटे. If you are not sure, what will happen? What will happen? You will be wrong sometimes. That there is no harm at all. At least you should answer. थोड़ा सा भी आपके दिमाग में आ रहा हो ना कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है. मैम is asking us to raise your hand, so you must do that. ज्यादा से ज्यादा क्यों हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा. नो प्रॉब्लम. यस, यू आर राइट. जिनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स आर टोटली डिफरेंट, आई मीन दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू देयर रूट वर्ड, राइट? लाइक फार, फारदर, फारदेस्ट. फारर, फारेस्ट नहीं है ना, फेयरर, फेयरेस्ट नहीं है. दिस इज फार, फारदर, फारदेस्ट.
और फर्दर फर्देस्ट। नाउ फार्दर फार्देस्ट का मतलब होता है उससे थोड़ा सा दूर। फार मीन्स दूर, फार्दर मीन्स उससे दूर, एंड फार्देस्ट मीन्स सबसे दूर। Who is this Danish Agarwal? यस बेटे, एक होता है फर्दर एंड फर्देस्ट। फर्दर मीन्स उससे आगे, मीन्स जो अभी हो रहा है उससे फर्दर क्या होगा, एंड फर्देस्ट मीन्स सबसे आगे। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मीनिंग्स आल्सो। Badly, worse, worst, you know it very well. Late, later, latest. Little less, least. Much more, most. Near, nearer, next. And well, better, best. जैसे हमने adjectives में किया था good, better, best. Bad, worse, worst. In the same way, badly and well are adverbs, so their comparative and superlatives are same. Now coming on to next slide. So how to compare the adverbs? So comparison of adverbs, first point is when there is no comparison, positive degree of adverb is used. I hope this is clear to everyone. Do you know this thing? When there is no comparison, which degree do we use? Bete, which degree do we use? Ma'am, positive degree. Positive degree. Very nice, very good. पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैरी केम अर्ली दिस मॉर्निंग, हरीश प्लेज वेल। तो हम यहाँ हैरी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे हैं, ना हम हरीश का कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट सेइंग दैट हैरी केम अर्ली एंड हरीश प्लेज वेल। बट व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अब एक से ज्यादा के बीच में मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन है, सो विच डिग्री डू वी यूज? वील यूज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। सी एग्जांपल, गोपाल केम अर्लियर देन हैरी। नाउ here we were just talking about Harry in the first example, but in the second example we are comparing Gopal with Harry. ठीक है? सो जब हम दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज कंपैरेटिव डिग्री। गोपाल केम अर्लियर बाय एडिंग ER, वाई को कट करके IER। रमा प्लेज बेटर, वेल की कंपैरेटिव डिग्री इज बेटर। रमा प्लेज बेटर देन हरीश। नाउ वी आर कंपेयरिंग हरीश विथ रमा। ओके, now when comparison is there between more than two objects, जब दो से ज्यादा के बीच में comparison है, then which degree is used बेटे? When there is comparison between more, superlative degree. So can you give me any? Okay, Ma'am, superlative. now bete we are taking the same examples in order to understand in a better way. Like Suresh came earliest of all. In this example, we talked about Harry. In this example, we compared Harry with Gopal. But in last example, we said that Suresh came earliest of all. कि सुरेश जो है वो गोपाल, हैरी मीन सबसे ज्यादा जल्दी आ गया. Now, Govind plays best of all. Now here we are talking about Harish. We are not comparing him with anyone. Here we are comparing Rama with Harish. But here we are saying that Govind plays best of all. कि जो गोविंद है वो सबसे ज्यादा अच्छा खेलता है, इवन रमा से, हरीश से या किसी और से. So this is the way to compare the adverbs, right? Now the most important thing is position of adverbs. That matters a lot, bete. In comparison of adverbs, there is a point that tells us how to position an adverb. For example,